Good morning children, this is your chemistry class. Today we will talk about conservation of air. वायु का संरक्षण. It is very much essential to conserve air. We cannot survive without air. We need air for respiration. Plants need air for performing photosynthesis. Aquatic animals, terrestrial animals need oxygen for survival. We conclude that if there would be no air, existence of life cannot be expected. Children, therefore, air is one of the important natural resources gifted to us for our survival. And so, we should have to conserve air. We should have to maintain the quality of air. We should not have to pollute it, but we should have to conserve it. We should avoid air pollution for our survival. For this purpose, we have to encourage plantation. We should have to plant more and more trees. So let us talk about how to conserve air. Conservation of एयर. वायु का संरक्षण आज का टॉपिक है बेटा. हम वायु को संरक्षित कैसे करें, ठीक है, ताकि पृथ्वी पर जीवन बना रहे, ठीक है ना. तो फर्स्ट थिंग आई लाइक टू से वी शुड हैव टू इनकरेज प्लांटेशन. Plants more and more trees. Plants more and more trees. More and more trees. कई पेड़ पौधों को लगाना चाहिए. Children, it is quite evident. यह स्पष्ट है हम लोगों को. Plant take in carbon dioxide during photosynthesis and give out carbon oxygen. What we take in for during respiration. बेटा, फोटोसिंथेसिस के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय में हरे पेड़ पौधों को अब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं. एंड इन स्पाइट ऑफ इट दे गिव आउट ऑक्सीजन विच इज यूजफुल फॉर अस. Therefore, we should have to plant more and more trees. बड़े मात्रा में हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और उसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करना चाहिए. We should not have to cut trees on large scale. We should have to encourage plantation. And children, second thing, I am talking about burning of fossil fuels. Fossil fuels, ईंधन जब जलती हैं, they produce a lot of poisonous gases also. बहुत सारे poisonous gases, acidic gases produce करते हैं. For example, it produces carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides, and so many other toxic gases are also released during combustion, during burning of fossil fuels. So beta, so I like to say that during cooking, fuels are burned. Grassen wood and other fuels are burned, and it produces a smoke. It gives out carbon dioxide on large scale. Therefore, we should have to use a smokeless chulha. Smokeless chulha for burning coal, kerosene and wood. ठीक है ना बेटा. तो स्मोकलेस चूल्हा का हमें उपयोग करना चाहिए. एंड थर्ड थिंग आई लाइक टू से दैट a smokeless fuel should be also used. A smokeless fuel should be used. स्मोकलेस फ्यूल का उपयोग करना चाहिए. जैसे कि आप उदाहरण दे रहा हूं मैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस.
It is compressed natural gas and it is LPG gas. बेटा देखो in daily life, early morning, evening, afternoon, night, our moms cook food using this LPG gas. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग होता है। एलपीजी सिलेंडर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होते हैं स्टोर्ड। इट इज कंबस्टिबल, इट is a smokeless fuel. It does not produce a smoke. It does not give out toxic or poisonous acidic gases. ऐसी कोई गैसेस नहीं देती है जो वायु को प्रदूषित करे। तो we should have to use LPG gas in spite of burning coal, in spite of burning wood, in spite of burning kerosene. ठीक है ना? तो LPG गैस can be used as a smokeless fuel. And second thing, I am talking about CNG, that is compressed natural gas. Beta, natural gas is compressed under high pressure and stored in cylinder. It is combustible. It burns to produce energy. In metropolitan cities like Delhi, Bombay, Calcutta, this CNG gas is being used to avoid air pollution. बस, कार, ये सभी वहाँ पे CNG गैस पर चलती हैं। And so nowadays it has been seen that air pollution of Delhi has been minimized. ठीक है ना? Because when this CNG gas is burnt as fuel in car and other vehicles, no more smokes, no more acidic gases are produced there, and so there is no air pollution due to burning these fuels. Beta, second thing, I like to talk about unleaded petrol. Unleaded petrol. I am talking about unleaded petrol. मैं unleaded petrol की चर्चा कर रहा हूँ, which is used in vehicles. यह vehicles में used होता है, ठीक है ना? तो leaded petrols are added to lead compounds are added to petrol to stop knocking sound, but in spite of it they are produces toxic lead compounds in air. It is highly toxic. It will adversely badly affect our lungs, our respiratory systems, our skin also. That's why we should have to avoid using leaded petrols in our vehicles. तो हमें क्या करना चाहिए भाई? वैसा पेट्रोल जिसमें लेड नहीं ऐड किया गया है, मतलब कि अनलेडेड पेट्रोल्स शुड बी यूज्ड इन आवर व्हीकल्स, ठीक है ना? तो बेटा आप सोचेंगे कि तो इन प्लेस ऑफ अनलेडेड पेट्रोल्स व्हाट शुड बी यूज्ड इन आवर व्हीकल्स टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ harmful gases. So we should have to fit a special device that is called catalytic converters. हमको उसके जगह catalytic converters का उपयोग करना होगा। We should have to use catalytic converters का यूज करना होगा। So what it will do here? What it will do? It will convert the highly toxic gases like carbon dioxide, carbon monoxide, which is highly toxic. When carbon dioxide is taken in during respiration, it will combine with the blood, it will combine with hemoglobin, forming carboxyhemoglobin, and it will cause deficiency of oxygen in our body, and as a result our health, our body will be badly affected. Ultimately we will lose life. It will make deficiency of oxygen in our body. Children, it is quite evident कि the affinity of
carbon monoxide with hemoglobin is very high in comparison to oxygen. ठीक है ना, इसलिए कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेगा, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाएगी. Therefore there is the need to convert carbon monoxide into carbon dioxide and it is the catalytic converter. यह catalytic converter एक डिवाइस का नाम है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. समझ मारी ये बात. So I am talking about the catalytic converter instead of using unleaded petrol. समझे? तो and second thing, nitrogen dioxide can be converted. देखो बेटा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, nitrogen dioxide should be converted to nitrogen and oxygen. It is not harmful. It is harmless gas. Nitrogen और oxygen is harmless gas. तो मेरे कहने का मतलब है, instead of using leaded petrol, we should have to use unleaded petrol, and a special device that is catalytic converter should be fitted in the exhaust to convert the harmful gas to harmless gas. जो गैस हार्मफुल है हमारे लिए उसको हार्मलेस गैस में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है ना. एंड फाइनली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अनदर पॉइंट, दैट इज इन फैक्ट्रीज, पावर हाउसेज एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज द गैसेज गिवन ऑफ फॉर स्कब डाउन विथ वाटर. नहीं, कुछ हाईली टॉक्सिक गैसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं बेटा फैक्ट्रीज में, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में एंड क्या कहते हैं पावर हाउस में. ठीक है ना. दिस आर वेरी हार्मफुल. दे आर वेरी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स विच मेक्स आवर एयर टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, पॉइजनस बना देता है. तो दैट गैसेज मस्ट बी स्क्रब्ड, should be absorbed by some liquids in factories, refineries, oil refineries, such that it should not pollute air. समझ रहे हो ना मेरी बात, what I am telling to all. तो फैक्ट्रीज में हुआ, oil refineries में हुआ, ठीक है ना, पावर हाउस में हुआ, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है, वहाँ पर जो टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस्ड होती है कुछ लिक्विड से पास करे ताकि वो टॉक्सिक गैस एब्जॉर्ब हो जाए. इट शुड नॉट पॉल्यूट आवर environment. That things I am talking with you. So then, second and last one, I like to talk about electrostatic precipitators. I am talking about 5 things. Electrostatic precipitator. Electrostatic देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स का भी हमें यूज हम कर सकते हैं फैक्ट्रीज में. जस्ट टू रिमूव द सॉलिड्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एयर. ठीक है ना. लाइक कार्बन पार्टिकल्स. नहीं, जैसे कार्बन पार्टिकल्स एयर में मौजूद है, ठीक है ना, तो दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वेस्ट गैसेस. ठीक है ना, बिफोर दे कम आउट इन एटमॉस्फेयर. ठीक है, जैसे कि कहीं फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं एंड इट इज रिलीजिंग आउट हाईली टॉक्सिक गैसेस, पॉइजनस गैसेस, then this electrostatic precipitator device is capable of absorbing that toxic solid particles, and harmless gases are released in atmosphere. So it will also prevent the air from getting polluted. So in this way we can conserve our air. हम अपने वायु का संरक्षण कर सकते हैं हाईली पॉइजनस गैस, टॉक्सिक गैसेस से.
Beta, I'll just talk about 5 points. I'm just making short recapitulation of that points, and 5 points को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं आपको शॉर्ट में सिंपल भाषा में छोटी सी बातों को कह देना चाहता हूँ। नंबर 1 मैंने आपको कहा था प्लांटेशन, रिकैप कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। प्लांटेशन शुड बी इंक्रीज। Number 2, smokeless should have smokeless stoves should be used, highly efficient होना चाहिए। Number 3, smokeless fuel, smokeless fuel should be used, जैसे कि CNG हो गया और LPG गैस हो गया बेटा। And number 4 thing, I'm just talking with you about unleaded petrol should be used. Unleaded petrol should be used. और पांचवी बात मैंने आपको कहा था, I have just discussed about catalytic converters. मैं आपसे catalytic converters की चर्चा कर रहा हूँ। कैटालिटिक नहीं, कैटालिटिक कन्वर्टर्स का उपयोग करें। एंड लास्ट थिंग आई हैव जस्ट डिस्कस्ड विथ यू, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिसिप्रोकेटर का उपयोग करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिसिप्रोकेटर्स का उपयोग करें। एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग these things we can reduce the pollution level, we can reduce air pollution, हम air pollution को reduce करते हैं। Children, this is about the conservation of air. air को संरक्षित हम कैसे कर सकते हैं, वायु का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, यह 5-6 points में हमने study किया है। You should go through the textbook carefully, try to listen what I have told you this time carefully. Ultimately you will you can explain how to conserve air. Okay children, that's all for today. We will talk next topics in next coming videos. Okay, thank you everyone. Bye everyone. Beta.